एक लिंक भेज देते हैं। तो क्या कल बस एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन रह गया था और स्टॉपल वाला बताना था और लिखना बाकी है। पहले लिखना स्टार्ट करोगे? चलो लिख लो। 15 मिनट अभी ज्यादा लिखेंगे और शाम में 15-20 मिनट ज्यादा लिखेंगे, ताकि अपन अपना वो जो टोपा वाला चैप्टर है वो अच्छे से आज कवर कर पाए, क्योंकि इस लेक्चर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अपन। 3-1 कहां से लिखना है? एडमिशन एंड कन्फेशन से। एडमिशन हो गया, बहुत ही बढ़िया। कन्फेशन से लिखना है। नेक्स्ट अप, पुट अप द हेड कन्फेशन पीपल। मैं जब तक लिंक शेयर कर देता हूं ग्रुप पे। लाइव वाले लड्डू वे अबाउट टू राइट। एक मिनट बस, until I send the link is until you wait। क्या हो गया उसको? ही इज सेफ यार, रात को मैसेज कर देगा वो। क्या हो गया उसको एकदम? करता हूं मैं कुछ। हाँ, सबको 500 वाला। फिर टूटेगी। अरे यार, ही इज लाइक CSK ब्रो, वोंट डिलीवर। और तुम सब RCB फैंस की तरह उम्मीदें नहीं छोड़ोगे। दोनों पे मारा ना, अभी तो हेल्दी हुआ है। सर एनी टिप्स फॉर क्विक रिवीजन? यार, एक महान टीचर ने भी ना एक ऑडियो रिवीजन सीरीज बनाई है, स्पॉटिफाई पे सर्च करो, मिलेगी तुम्हें। अब तो आंसर भी नहीं है यार, मतलब मैं और क्या बोलूं रिवीजन के लिए? भैरव बोलो। अच्छा, तू भैरव को बुला रहा है। चलिए, कन्फेशन। चलो 3-1 एक्शन। Adhiniyam does not defines the word confession. Adhiniyam does not defines the word confession. Adhiniyam does not defines the word confession. Fast लिखना। But includes the same in admissions. 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 Comma, hence, confessions are special form of admissions. Hence, confessions are special form of admissions. Comma, so every confession is an admission. Every confession is an admission. But not all, but not all, but not all admissions are confessions. But not all admissions are confessions. A confession is relevant unless a confession is relevant unless A, it is caused by inducement, comma, threat or promise. It is caused by inducement, comma, threat or promise in reference to the charges against him.
in reference to the charges against him, in reference to the charges against him, in reference to the charges against him. B, if it is made to a police officer, if it is made to a police officer. समझा ना, ऊपर मैंने unless लिखा है. A confession is relevant unless it is made to a police officer. C, if it is made in custody of a police officer, if it is made in the custody of a police officer, if it is made in the custody of a police officer without the presence of a magistrate, without the presence of a magistrate, without the presence of a magistrate, without the presence of a magistrate. Next point. The confession to be relevant must be made by, the confession to be relevant must be made by, the confession to be relevant must be made by the accused himself and should be self-harming, and should be self-harming. And should be self-harming. Next point. A confession is only an evidence against the confessor. A confession is only an evidence against the confessor. However, to this general rule, Section 24 is an exception. However, to this general rule, Section 24 is an exception. Section 24 is an exception. Next point. Section 24 states that any confession voluntarily made, Section 24 states that any confession voluntarily made in front of the magistrate, in front of the magistrate, any confession voluntarily made in front of the magistrate any confession voluntarily made in front of the magistrate can also be taken against, can also be taken against can also be taken against the co-accused, can also be taken against the co-accused. Next point. A confession must admit all or substantially the all of the facts in issue. A confession must admit all or substantially the all
facts in issue which constitute the offense, which constitutes the offense, which constitutes the offense. Next point. A confession caused by inducement, threat, coercion is irrelevant. Next point. A confession caused by inducement, threat, coercion is irrelevant. Is irrelevant. लाइन चेंज करना सेम पॉइंट है. To make it irrelevant, the following 6 facts must be established. To make it irrelevant, the following 6 facts must be established. A. That the statement is a confession. A. That the statement is a confession. That the statement is a confession. B. That it is made by an accused person. That it is made by an accused person. That it is made by an accused person. C. That is made in front of a person in authority. That it is made in front of a person in authority. D. That it has been caused by inducement. That has been caused by inducement, threat, or promise. That has been caused by inducement, threat, or promise. D. E. That the inducement was in reference to the charges against the accused. That the inducement was in reference to the charges against the accused. F होगा ना. And it was sufficient enough. And it was sufficient enough to create a doubt in the mind that by doing the confession the person would get more advantage and avoid
मैंने क्या बोला? मोर एंड अवॉइड एनी इविल. Done. Next point. It is not required to be proved that the confession was not voluntary. It is not required to prove that the confession was not voluntary. Was not voluntary. It is for the accused. It is for the accused to create a legitimate doubt in the mind of the court. It is for the accused to create a legitimate doubt. A legitimate doubt. A legitimate doubt in the mind of the court. Done? Okay. Now next आपको लिखना है state the difference between admission and confession and ढांचा. अलमारी बनाओ. हाँ जी. First admissions. Okay. बना रहे हो? Okay. मजाक कर रहा था. Healthy jokes. बेसिस बना दो, लिखवा देंगे. नहीं बनाओगे, नहीं लिखाएंगे, उसमें क्या. जैसा तुम चाहो. तुम बोलो होमवर्क देना, होमवर्क दे दो. नहीं तो इतना मुंह मतलब. सर इसमें पुलिस ऑफिसर को प्रूव करना होगा ना कि कन्फेशन वॉलंटरी है. इफ अ कन्फेशन इज मेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, वी प्रिज्यूम दिस इज वॉलंटरी. इफ द अक्यूज सेज कि मुझसे जोर जबरदस्ती से कन्फेशन कराया गया है, तो वो ही प्रूव करेगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है. प्रोसिक्यूशन का कोई काम नहीं है. आपने कन्फेस किया है. प्रोसिक्यूशन बोले हम तो वैसे भी प्रूव कर रहे थे केस, यही आया कन्फेस करने, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कन्फेशन से. इसे अगर है तो भैया खुद प्रूव करे. हम ये भी नहीं कह रहे प्रूव करे, तू बस कोर्ट के दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर दे कि तेरा जो कन्फेशन था वो वॉलंटरीली नहीं आया था. वर्क्स. हु डिड अनड्यू इन्फ्लुएंस? मतलब वो गलत नहीं है, बट प्लेंटिफ के वो उसने गवर्नमेंट को इसका फायदा उठाते हैं. डिपेंडेंट ने बोल दिया कि हां मैंने गलत किया. करो, प्रूव करो. सब कुछ तुम्हारे ऊपर है. अपील किसी भी चीज पे हो सकती है. तुम्हें लगता है सलमान खान का ड्राइवर स्वेच्छा आया होगा बोलने कि गाड़ी में चला रहा था? अपील करो, सुनेंगे आपकी बात. डन. पर जो इंसान पहले दबा था वो आगे भी दबेगा ही. ये फितरत है. जो ना दबा वो ना दबा. जिसने पहले भी घुटने टेके वो आगे भी टेके देगा वापस से, फिर पलट जाएगा. तो इतना कुछ होता नहीं है. हाँ जी बोलूं. बेसिस. फर्स्ट पार्टी. फर्स्ट बेसिस लिखना पार्टी. इसके अंदर लिखेंगे क्या? पहले एडमिशन लिखा है, कन्फेशन लिखा है? पहले एडमिशन लिखा है. एडमिशन में कैन बी मेड बाय, कैन बी मेड बाय एनी पार्टी. कैन बी मेड बाय एनी पार्टी against any person. Can be made by any party against any person. B. Can be made by the accused only against himself. Can be made by the accused only against himself.
only against himself. B. Types of cases. Types of cases. Admission can be made in criminal as well as civil cases. Admission can be made in criminal as well as civil cases. बी, एक सेकंड, सी होगा सर, इस सामने की तरफ लिखना है कन्फेशन कैन बी मेड ओनली इन क्रिमिनल केसेस. सी, प्रूफ ऑफ गिल्ट, मतलब जो आपका बेसिस बनेगा दैट इज प्रूफ ऑफ गिल्ट. Admission may not directly lead to proving of the guilt. Proving of the guilt. Confession में if made voluntarily leads to proving of guilt. Leads to proving of guilt. नेक्स्ट पॉइंट कितने हो गए? तीन हो गए. कोई अच्छा डिफरेंस बचा क्या? वॉलंटरी. नेक्स्ट लिखना वॉलंटरी. एडमिशन में लिखना एन एडमिशन may or may not be voluntary. An admission may or may not be voluntary. Confession में क्या लिखोगे? Must be voluntary. It must be voluntary. Next लिखो corroboration. Corroboration. CORRO, coro, BORA, boro, TION, corroboration. Corroboration. What is corroboration? An admission आया है, साथ के अगल बगल के फैक्ट्स भी देखेंगे कि इस एडमिशन से मैच हो रहे कि नहीं. कन्फेशन में अगल बगल के फैक्ट्स देखने की जरूरत नहीं है. So corroboration in case of admission, it must be, in case of admission, it must be corroborated with other evidences. Corroborated with other evidences. It must be corroborated with other evidences. In case of a confession, generally no corroboration is required. Generally no corroboration is required. इधर 4-5 डिफरेंस हुए, 6 हो गए ना, 5 हो. अच्छा बेसिस लिखा तो फिर एक और लिख लो यार. एविडेंशियल वैल्यू. एडमिशन प्राइमा फेसी एविडेंस. प्राइमा फेसी एविडेंस. कन्फेशन क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस.
कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आपके इसमें दिया नहीं इतना, आपके इसमें खाली एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब बताया, अगर एक रेप्यूटेड इंसान जिसको आप कन्फेस करो वो कोर्ट में आके बोले और हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, इतना ही बताया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। बट अपन डिफरेंस लिख लेते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और ढांचा बना लो। बोलूं? अरे पेन पेंसिल स्केल के लिए रुका हुआ, तुम्हारे इंतजार ही खत्म नहीं हो रहे यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास तो अब स्केल जीतने का मौका भी नहीं है। हाँ, तो मीनिंग, हाँ जी, पहला बेसिस है मीनिंग। कन्फेशन किसके सामने किया जाता है? तो इसके अंदर लिख लो, इट इज मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। इट इज मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन अ कोर्ट। सामने की तरफ, इट इज अ कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ कोर्ट। It is a confession made in front of any person other than the court. Second, evidential validity. Evidential validity. क्या भाई, किसकी क्या वैलिडिटी है? एक्स्ट्रा जुडिशियल को वापस से प्राइमा फेसी कर दूं और कन्फेशन को कंक्लूसिव एविडेंस कर दूं। सो जैसा अपन ने एडमिशन कन्फेशन लिखा था वैसा ही एक्स्ट्रा जुडिशियल और कन्फेशन में लिखना है। एक्स्ट्रा जुडिशियल हैज अ प्राइमा फेसी एविडेंशियल वैल्यू और कन्फेशन हैज अ कंक्लूसिव एविडेंशियल वैल्यू। बोला? थर्ड होगा ना? क्या क्या लिख लिया मैंने पहले? क्या बोला? मीनिंग लिखा है और एविडेंशियल वैल्यू। और क्या होगा? एविडेंशियल में रिलायबिलिटी लिखने का कोई फायदा नहीं है। कोरोबोरेशन, 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 कोरोबोरेशन। पहले क्या कन्फेशन लिख रहे हो? पहले जुडिशियल कन्फेशन लिख रहे हो ना? It is a conclusive evidence, hence need not be corroborated with other facts. It is a conclusive evidence, hence need not be corroborated with, need not be corroborated with, need not be corroborated with किसके साथ? Other facts. हाँ जी, उसको since it is a prima facie evidence needs to be corroborated with other facts. Needs to be corroborated with other facts.
बोलो। नेक्स्ट लिखना, मीनिंग लिखा, एविडेंशियल वैल्यू लिखा, कोरोबोरेशन लिखा। कैन इट बी रिट्रैक्टेड, बेसिस में डाल देना, कैन इट बी रिट्रैक्टेड, कैन इट बी रिट्रैक्टेड। मेरे को याद दिलाना, नेक्स्ट अपन प्रोसीजर लिखने वाले। कैन इट बी रिट्रैक्टेड, इसके अंदर लिखना, पहले जुडिशियल है ना, अ जुडिशियल कन्फेशन if voluntarily made, a judicial confession if voluntarily made, if voluntarily made, is very difficult to retract, is very difficult to retract, is very difficult to retract. However, एक सेकंड, however मतलब उधर वाला, extrajudicial confession है ना, since it is extrajudicial, it is easy to retract, it is easy to retract. नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, प्रोसीजर ना, प्रोसीजर की जगह फॉर्मेलिटी लिख दो, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन के अंदर लिखना है, इट हैज अ फॉर्मल प्रोसीजर, like warning the accused, like warning the accused, हाँ जी जसप्रीत, like warning the accused that this might go against him, that this might go against him, that this might go against him. तुम ढांचे बनाने में विश्वास नहीं रखती, बाद में बना लेंगे, ये भी सही है। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ उधर की तरफ, इट इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, इट इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। खूब है, 3-4 हो गए डिफरेंस, 5 हो गए, खूब है। इट्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस। चाहिए तो एक बाद में एग्जांपल डाल सकते हो, कन्फेशन के अंदर जुडिशियल वाले में आप लिख सकते हो व्हेन एवर वॉलंटरली मेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, और एक्स्ट्रा जुडिशियल में वॉलंटरली मेड इन फ्रंट ऑफ अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। ठीक है, अगर लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बस उस टाइम याद रखना एग्जांपल्स आर अलाउड टू बी रिटन अप। ठीक है, okay, so this completes admission, confession, admission versus confession, extrajudicial and judicial confession, which is the highest probable questions जो आ सकते थे। next up is, अब heading है अलग, statement by person who cannot be called as witness, statement by person who cannot be called as witness। बोलूं, एक फोटो खींच लेता हूं, चल रहा है यार। हाँ, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, बोलूं, हाँ जी, a statement can also be admitted as a relevant fact. A statement can also be admitted as a relevant fact. A statement can also be admitted as a relevant fact if, अब ABC करके लिखना है इसके अंदर, A, it is made by a person who is dead if
It is made by a person who is dead. B. It is made by a person who is incapable of giving evidence. It is made by a person who is incapable of giving evidence. C. Who cannot be found. Who cannot be found. Without any undue delay or expense. देखा? Next point. Such facts become relevant. Next point. Such facts becomes relevant in the following cases. Such facts become relevant in the following cases. A. Statement by a person. Statement by a person. As to his cause of death. As to his cause of death. As to his cause of death. Or any circumstance which resulted into his death. Or to any circumstance which resulted. Yes, Konok. But अभी अपना वो काम नहीं है. हाँ जी. Or to any circumstance resulting into his death, comma, when such statement was made to any person, when such statement was made to any person before his death, before his death, becomes admissible. Even though it is coming from a person who cannot be called as, even though when it is coming from a person who cannot be called as a, who cannot be called as a witness. Jama, simple language. Second statement of statement in the course of business made by a person, statement in the course of business made by a person मैंने बोला statement in the course of business made by a person in the form of entries or any other memorandum or any other memorandum or any other memorandum in the books which are ordinarily kept, which in the books which are ordinarily kept in the course of business. Or any books which are kept in the ordinary course of business, comma, can be admitted as evidence even when the person who made it is not around. Even when the person who made it is not around. Is not around. Next. Jama points here. Statement against interest.
स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, इसका डैश के लिखना, व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट, when the statement is against the interest of a person making it, or which will expose him to criminal prosecution, or which will expose him to criminal prosecution, can be admitted as an evidence, can be admitted as an evidence. जो नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट कस्टम मैटर्स, ये सिर्फ लाइन कॉपी कर लो, अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाला लाइन मैं लिखाता हूं। बोलो, नेक्स्ट पॉइंट, statement relating to existence of any relationship, statement relating to existence of any relationship, comma, when the person making that statement, comma, when the person making that statement had special means of knowledge, has special means of knowledge, has special means of knowledge of the same, of the same. Next, statement made under special circumstances. ठीक है, लिखा, बोलो, फॉलोइंग आर दी statements, following are the statements which becomes relevant, which becomes relevant, which becomes relevant if they've been made under special circumstances. If they've been made under special circumstances. A. Entries in the books of accounts. एक सेकंड, ये अपन ने पहले भी लिखा ना, स्टेटमेंट्स फॉर विच कैन नॉट बी कॉल्ड, अगर इसकी एंट्री करने वाला आदमी जीवित होता तो उसी को बुलाते हैं, अब वो नहीं था तो ये किताब के ऊपर रहेंगे। अब ऑल्दो ये स्टेटमेंट अकेले में इतना पावरफुल नहीं है, बट क्या ये रेलेवेंट है? सो यू राइटिंग एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स kept in the ordinary course of business, kept in the ordinary course of business are relevant to charge anyone with liability, to charge anyone with liability.
नेक्स्ट पॉइंट, an entry in a public or official book, an entry in a public or official book stating a fact in issue or relevant fact, stating a fact in issue or relevant fact, stating the fact in issue or relevant fact, and which is made by a public servant, then such an entry becomes relevant. Then such an entity becomes then such an entry becomes relevant as having been made under special circumstance. As having been made under special circumstance. As having been made under special circumstance. Next point. When the court forms any opinion as to any law of any country, when the court forms any opinion as to the law of any country, when the court forms any opinion as to the law of any country, then referring to any books issued by the government of that country, issued by the government of that country regarding the law, regarding the law is admissible as a fact, is admissible as a fact. Done. Is admissible as a fact. Done. Works. Almost to the last thing, opinion of third person. That's the last thing, and we'll reach to privileged communications. Okay. ठीक है, पहले आप थोड़े पढ़ लें, लिख लेके थक गए, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, ये लिखते हैं, फिर वापस से पहले वाले दो लिख लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट ले लो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ो। अच्छा, अब समझना प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कुमकुम आई मेरे पास, आई हैपन टू बी अ लॉयर, शी हैपन्स टू बी अ क्लाइंट, जाके कह रही कि सर मुझसे एक मर्डर हो गया। मैं ग्रेट, कैसे हुआ? कहती सर मैंने एक बाइक उठाई, गाड़ी चलाई, सामने से एक लड़का आ गया तो गलती से टक्कर हो गई। मैं डोंट वरी कुमकुम, इसे मर्डर नहीं कहते। बोले सर कैन आई कंप्लीट? मैं कहा ओके। कहते कि सर वो लड़का नीचे गिरा हुआ था, कह रहा था कि मैं तुम पर केस कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये वो। तो जब तक वो कुछ कह रहा था तो मैंने गाड़ी रिवर्स लेकर उसकी गर्दन के ऊपर से निकाल के फिर आगे से निकाल दी, तो फिर वो चुप हो गया। मैं कहा गुड कुमकुम, तुम सही केस फाइल करने आई हो, ये मर्डर ही है, ठीक है। ओके, तो इसने कहा सर क्या करना होगा? मैं कुछ नहीं, डोंट वरी, वील प्रूव इट एज एन एक्सीडेंट, गलती से हो गया, एंड वील सी व्हाट हैपेंस इन कोर्ट। कहते ही डन सर। बोले अच्छा सर, वहां पर सामने ना हर जगह सीसीटीवी थे, तो मैं 2-4 बार आगे पीछे करते हुए दिखी हूँ। मैं कुमकुम आराम से तुम बैठकर सारे फैक्ट्स बताओ। कहती कि सर वो जो लड़के से एक्सीडेंट हुआ उससे 2 दिन पहले मेरा झगड़ा भी हुआ था। मैं कहा ग्रेट। मैं कहा तो तुम्हारा इतना कोइंसिडेंस अपन कैसे प्रूव करेंगे 2 दिन पहले झगड़ा? बोले सर इसीलिए आपके पास आई। मैं कहा राइट। मैं ठीक है, कोर्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे वो लड़का जो मरा उसके पेरेंट्स भी आए टू हायर मी एज अ लॉयर, और वो केस मुझे ज्यादा इजी लग रहा था जीतना, तो मैंने इसका नहीं एक्सेप्ट करके इसका एक्सेप्ट कर लिया, और कोर्ट में जाके मैंने बोला कि मैं खुद विटनेस हूं। मैं कहा मेरे को ही आके बता रही थी सब कुछ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, क्योंकि मेरे टेबल पे भाई हम लोग एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए रखते हैं, बचपन की आदत है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई डू दिस? क्यों?
केस सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। आपने सर ऐसे मत करो, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके एविडेंस नहीं दिए जाते, समझ रहे हो? ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके उसने विश्वास करके कोई चीज बताई थी और मैंने आके कोर्ट में बोल दिया। अब मैं उसका लॉयर हूं या ना हूं, बट रूल ये कहता है कि मैं उसकी बात बाहर नहीं कर सकता। ऐसे तो सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। वकील से बस एक बार तुम्हारा झगड़ा हो जाए, बाकी बता देगा सब कुछ। और कितनी बात मेरी क्रेडिबिलिटी की, हो सकता है उसने कभी ऐसा बोला ही ना हो, मैंने बनाया हो, मैंने इंड्यूस किया हो, मैंने बुलवाया हो, तो मेरी बातों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सो ये सब आ जाते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन में। सो सर आपने कहा कौन से कम्युनिकेशन प्रिविलेज होते हैं? इन सबको प्रिविलेज बोलते हैं। तो यहां से यहां तक रीड कर लो, इसका एविडेंस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मैं सीसी करके आ जाऊं। तो बताएगा कुल पता रहे। नाउ फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। अब सर ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिसके लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता, दो दे आर रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है बट
द फैक्ट्स आर मेनली कवर्ड इन 127 to 134. BSA के 127 to 134 वेयर एविडेंस इज प्रोहिबिटेड. अब सर कहां पर ऐसे होते हैं कि जहां एविडेंसेस प्रोहिबिटेड है? ये प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होते हैं. हमने ठीक है. पहला है एविडेंस ऑफ अ जज और मजिस्ट्रेट इन रिगार्ड्स टू सर्टेन मैटर्स. अब समझिएगा, जजेस के केस में दो पॉइंट्स आएंगे आपके पास. मैं एविडेंस कहां से लाया, आप मुझसे उसका सोर्स नहीं पूछ सकते. बिकॉज अगर आपने मुझसे पुलिस, अच्छा एक सेकंड, एविडेंस ही क्यों, आप यहां पर पुलिस ऑफिसर, हाँ लिखा है ना, लिखा, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास कहां से इंफॉर्मेशन आई, आप क्या नहीं पूछ सकते उनसे? सोर्स नहीं पूछ सकते. अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि सोर्स बताने से सोर्स की एग्जैक्टली लाइफ एट रिस्क आ जाएगी? सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि कम्युनिकेशन बिटवीन मजिस्ट्रेट एंड एन आउटसाइडर जिससे उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, यू कांट क्वेश्चन इट. पुलिस वालों को बहुत बार रिपोर्ट मिलती है कि वहां पर क्राइम होने वाला है, जाओ जाके चेक कर लो. पुलिस वालों से आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर बस नाम बता दीजिए, हम अरेस्ट तो हो रहे हैं ना. नाम बता दिया तो उसका नाम खत्म करके ही मानेगा. सो ऐसे कोई भी एविडेंसेस जो जज या मजिस्ट्रेट पेश करता है, सो एविडेंस ऑफ अ जज मजिस्ट्रेट, आप बोल रहे हो कि जज को मजिस्ट्रेट को कि एविडेंस दो कि ऐसा हुआ ना, जज से कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ना जज के सोर्स से कोई क्वेश्चन किया जा सकता है. तीसरा, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन. अच्छा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इंडिया फ्रांस से डील कर रहा है टू बाय सम मोर प्लेन्स, फाइटर जेट्स. आप पूछ रहे हो बताना कितने में ले रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज. डीजल के पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना, वो कितने में आ रहा है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये देश के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस है. देश को लगता है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो मना भी कर सकते हैं. सो एविडेंस ऑफ अ जज, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मजिस्ट्रेट. अच्छा, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. स्टेट अपने कोई डिसीजन ले रही है, स्टेट कोई नई ट्रीटी साइन कर रही है, कोई पॉलिसीज बना रही है जो एज ऑफ नाउ डिस्क्लोज नहीं है. आप कह रहे हो कि हमें डाउट है, आप आओ अभी का भी डिस्क्लोज करो. सो कोई भी अनडिस्क्लोज चीज है, अभी स्टेट डिसाइड कर रही है, डिस्कशन है, कैबिनेट पेपर्स है, प्रपोजल्स चल रहे हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं है. सो टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो उनका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो अपने हिसाब से देखेंगे. फिफ्थ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड हिज बैरिस्टर. बैरिस्टर मतलब लॉयर, client and his lawyer, attorney or any legal advisor. Communication during marriage. Marriage Hindu laws के हिसाब से it's the most pious thing, and anything done said between you guys, there is no necessity of giving the evidence of the same. Like a husband and a wife, इन दोनों के बीच की हुई बात is a privileged communication. ठीक है, we would not allow the evidences of such. नेक्स्ट, ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर एज अ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस. रेड मूवी देखी थी, सोर्स कहां से आया, आपने कहा सर वी आर अ रेवेन्यू ऑफिसर, हमें किसी के ऑफेंस के बारे में पता पड़ा, यू कांट क्वेश्चन कि कैसे पता पड़ा, कहां पता पड़ा, कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है. हम इन सबको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस का दर्जा देते हैं. अच्छा, अब इन्हीं का एक एक आगे है, मैंने तो आपको अभी ऊपर से एग्जाम्पल दिए इसके, उनका एक एक पॉइंट है. जैसे एविडेंस ऑफ जज एंड मजिस्ट्रेट, इसमें लगा 127 BSA. नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन एनी ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट. कोर्ट की बात हो, अगर कोई सुपीरियर कोर्ट तुमको बोले तो बात अलग है, बाकी सबको बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज कंडक्ट. व्हाई डिड यू से दैट टचिंग अ गर्ल इम्प्रॉपरली डज नॉट अमाउंट टू रेप? यू कैन आस्क. वो उनका रैशनल था, उन्होंने बोला. हाँ, पर अगर उनकी हायर कोर्ट उनको बोले अगेंस्ट योर कंडक्ट कि आप एक बार यहां पे आइए, हमें बताइए. बहुत बार आप कोर्ट के डिसीजन से नाखुश होते हैं, जैसे सलमान खान के केस में, ही वॉज गिवन बेल इंस्टेंटली आफ्टर द डिसीजन. आई एम अनहैप्पी कि इतना जल्दी कैसे आपने बेल दे दी. भारत में ऐसे बेल मिलती है? भारत में कन्विक्शन से पहले बेल नहीं मिलती, ये तो कन्विक्शन के बाद रिलीज कर दिया इसको. सो आई हैव अ क्वेश्चन टू द कंडक्ट ऑफ द जज, but no judge can be questioned as to his own conduct in a court as a judge or magistrate. सिर्फ उनको कौन कंपेल कर सकते हैं? सीनियर कोर्ट, हायर कोर्ट. और as to anything which came to his knowledge in a court as a judge, he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting. बाकी किसी और चीज के लिए आप उससे फिर भी पूछ सकते हो कुछ, बट किसी कोर्ट में किसी जज को किस चीज के लिए नहीं पूछा जा सकता? his कंडक्ट. एक्सेप्ट कौन पूछ सकता है?
हायर कोर्ट. Communication during marriage. Under 128, communication between the husband and wife during marriage is privilege. शादी के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी बात हुई हो उसे हम प्रिविलेज मानते हैं. And its disclosure cannot be enforced. This provision is based on the principle of domestic peace and confidence between married couples. The section contains two parts. First, which deals with privilege of the witness, while the second deals with the privilege of the husband or wife of the witness. ठीक है, तो शादी के दौरान की गई बातें प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है. चौथा, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने जस्ट. एक बार 128 देखोगे. नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, कोई व्यक्ति जिसकी शादी हुई है, shall not be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. समझा क्या? You can't compel me to ask what was the communication between us during the marriage. Obviously, voluntary जो करना है करो. Section 128 बहुत क्या बोलता है? No person who is married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents. आगे मत बढ़ना. आप कोई फैक्ट डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते जब तक सामने वाला कंसेंट ना कर दे. आपने कहा ठीक है सर, अभी तक ये समझ में आया. मान लो मैं एक व्यक्ति से शादी कर चुका हूं, मुझे अब कंपेल नहीं कर सकते कि हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और मैं खुद भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक मुझे सामने वाला अलाउ ना कर दे कि आई एम अलाउड टू स्टेट द सेम इन द कोर्ट, एक्सेप्ट कब? बिटवीन मैरिड पर्सन और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर. बस एक ही जगह है जहां ये एक्सेप्शन नहीं लगता. मेरे और मेरी बीवी में ही केस हो गया, अब हम ही एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तब हम एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं. लाइक यू गो फॉर डिवोर्स, यू गो फॉर समथिंग, तब आप एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दे सकते हो. अब इंस्टीट्यूट की गलती क्या है? खाली 128 की फर्स्ट लाइन देते हैं, बाकी सब कुछ देते नहीं है. अब आप यही सारी मजदार में घूम रहे होगे कि सर लोग तो एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे. सो लेट्स कंक्लूड 128 इन द सर्कल. अ हस्बैंड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू स्टेट एनी कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज. Neither the husband can disclose. एक husband includes wife, उल्टा भी हो सकता है. Neither the husband can disclose anything without the consent of the wife. Okay. Let's say for an example, I am impotent. My wife knows it. We go in the court and she makes a statement that he is impotent. She can't. It's a privileged communication between us. Of course, if I consent to it and she states it, कोई दिक्कत नहीं है. One. However, डाइवोर्स का ग्राउंड ही मेरी इंपोटेंसी है. अगर डाइवोर्स का ग्राउंड ही मेरी इंपोटेंसी है, तब तो वो ऑब्वियसली क्लेम करेगी ना कि सर दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग फॉर डिवोर्स. सो सीखने वाली बात थी कि हम दोनों को कोई कंपेल नहीं कर सकता, हम दोनों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते एक दूसरे से बिना पूछे. हाउएवर, अगर एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो अगेंस्ट ईच अदर, तो ये सेक्शन आपको ये प्रिविलेज नहीं देता. वर्क्स? श्योर है एवरीवन? चलो, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, 127 का भी अगर आपको देखना हो तो वो भी देख लो. नो जज, वैसे ऊपर सही था पूरा हुआ, और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट
or anything which came to his knowledge in the court, but he may be examined to other matters occurred in the time when he was acting as a judge. इसका illustration देखना. A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer question. A ने आगे जाके कोर्ट में बोला कि जज साहब ने मुझसे गलत तरीके से एविडेंस दिया था. B cannot be compelled to answer question as to this except upon the order of the superior court. अब सिर्फ और सिर्फ जज साहब से तभी सवाल पूछे जाएंगे जब सुपीरियर कोर्ट बोलेगी, वरना कोई सवाल नहीं है. A is accused before the court of session of giving false evidence before B, a magistrate. B cannot be asked what A said except upon the order of the superior court. ठीक है. अब देखना तीसरा. A is accused before the court of attempting to murder a police officer while on his trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred. उससे यह पूछा जा सकता है कि इस पूरे केस में हुआ क्या था, पर खुद के कंडक्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं होता कि तूने ऐसा क्यों किया था, उधर क्या हुआ था. आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसी ऐसी बात हुई थी. अभी क्लियर? 127 क्लियर है, 128 क्लियर है. चले, ये हो गया. हाँ जी, अफेयर्स ऑफ स्टेट कोई अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है? ओनली टू एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. आपके पास सरकार ने जो रिकॉर्ड पब्लिश भी नहीं किए उसकी कॉपी आ गई, प्रिविलेज्ड. कहां से आई, क्या हुआ, कुछ भी हुआ, कैन नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस relating to affairs of state. So 129 कहता है no one shall be permitted to give any evidence derived from any unpublished records relating to the affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department. आपको department head की permission लेनी होगी, who shall give or withhold such permission if he thinks fit. लाइव गवारो, समझा तुमको इधर सबको. एंड लास्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं. कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल. सो 132, चल मैं बताता हूं. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन between an advocate and a client, we did discuss this, which are protected from disclosure. A client cannot be compelled, neither can an advocate be allowed without the express consent of client to disclose any oral or any documentary communication between them in professional confidence. Agreed? The rule is found on impossibility of conducting legal business. अगर आप ऐसे करोगे तो लीगल बिजनेस इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी जज किसी लॉयर के साथ बैठोगे, उसको बताओगे और वो कल जाके तुम्हारे खिलाफ एविडेंस बन जाएगा, ऐसे तो वकालत ही खत्म हो जाएगी. आपने कहा सर पर इससे क्राइम तो सॉल्व हो जाएगा ना. बेटा देखो, फर्स्ट वी आर इन द बिजनेस ऑफ, अंडरस्टैंड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ डिफेंडिंग समवन. कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है वो ये मानता नहीं है कि वो क्रिमिनल है. तुम जीवन में सबने, तुमने भी कोई गलती करी होगी, मैंने भी कोई गलती करी होगी, हम नहीं मानते कि हम गलती करते हैं. तुम एक जस्टिफिकेशन ऐड करते हो तुम्हारे दिमाग में, मैंने ऐसा किया क्योंकि. डिफेंस हमेशा यही मानता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, पर ऐसा हुआ क्योंकि. अगर हम सब ऐसे चलने लग गए कि तूने किया, बात खत्म, तो फिर जुडिशरी का मतलब ही नहीं है. सो एवरीवन, एनीवन हु डज एनीथिंग हैज अ रीजन. लेट्स मेक श्योर इट टू द कोर्ट, एंड इफ इट इज जस्टिफाइड, इट गोज गुड. So the rule is found on the impossibility of conducting legal business without professional assistance and securing full and unreserved communication between the two. Under these sections, neither an advocate, na uska koi interpreter, na koi clerk, na koi employee can be permitted to disclose any communication made in the course for the purpose of professional employment of such advocate, और ना ही इसके डॉक्यूमेंट के कोई कंटेंट ये लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं. Works. Further, under 134, no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may be appeared to court necessary to be known in order to explain any evidence which he is given, but no other. Anyone? आएगा समझ में 134? Okay. Okay. I've also kept 134 open of the Bear Act.
समझे? नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे बिटवीन हिम एंड हिज लीगल एडवाइजर. तो मैंने जो अपने लीगल एडवाइजर को बताया, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मैंने उसको क्या बताया. पर एक सेकेंड, पर अगर मैंने ऑफर किया दैट आई वांट टू बी अ विटनेस, इफ आई वांट टू बी अ विटनेस, अब मैं विटनेस बनाऊं तो क्या मुझे कंपेल किया जा सकता है टू डिस्क्लोज ऑल द कम्युनिकेशन एज द कोर्ट फाइंड्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट? The answer becomes yes. So let's say I was talking to my lawyer. Anything what I told to my lawyer, you cannot compel me. However, if I have stated that I want to be a witness, तो क्या विटनेस से जज भी क्वेश्चन कर सकता है, विटनेस से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, फिर विटनेस से कुछ भी पूछा जा सकता है. अगर तूने ऑफर किया विटनेस बनने के लिए तो वी विल आस्क यू. ठीक है, 134 था. बहुत ही बढ़िया अवधि. परफेक्ट. दैट इज इट. दिस कंप्लीट्स इट अप. लिख लें. एक टॉपिक और रह गया क्या? ठीक, पहले एक बार लिख लो. 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा आपको, ताकि मैं स्टॉपल बताता हूं. स्टॉपल आपको आता है वैसे, वट एवर. अब एक बार बताओ, तुमने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई एम गोइंग टू सेल यू माई फोन फॉर 30,000. एम आई स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द सेम? क्या फ्यूचर में मेरे को आपको 30,000 में फोन देना ही पड़ेगा? दैट्स अ स्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट. इतना से टॉपिक है वो. तो कहां से लिखना है अपने को इसमें? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन. पुट अप द हेड, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन. ये कितने पेजेस के रिटन नोट्स बने? ये हम 8-9 पेजेस. कोई और व्यक्ति को नहीं, सिर्फ जो विटनेस बनेगा उससे सवाल किया जा सकता है, वकील से नहीं. तुम विटनेस बनी, मैं नहीं. तुमसे पूछे, तुम बताओ, तुम्हारी बात है, वकील को मत बीच में लाना. मैं आज भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में चुप ही रहूंगा. शुरू करेंगे. ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन. इसके अंदर लिखेंगे द जनरल रूल इज, द जनरल रूल इज that the opinion of a third person is irrelevant, that the opinion of a third person is irrelevant. The general rule is that the opinion of a third person is irrelevant. Is irrelevant. Comma, however to this rule following are the exceptions. However to this rule the following are the exceptions. The following are the exceptions. A, opinions of experts, opinions of experts, opinions of experts. इसके अंदर डैश करके लिखेंगे if the question is to identify a particular handwriting or finger impression, if the question is to identify a particular handwriting or fingerprint, then the opinion of a person, then the opinion of a person skilled in the same, skilled in the same becomes relevant, becomes relevant. Comma, such statements are called expert opinions. Such statements are called expert opinions. Next, facts bearing upon opinions of experts. Facts bearing upon opinions of experts. लो
A fact though not relevant. A fact though not relevant. A fact though not relevant. A fact though not relevant becomes relevant if it is consistent or inconsistent. If it is consistent or inconsistent. If it is consistent or inconsistent with the opinion of the expert. With the opinion of the experts. See, opinion as to handwriting and signature. Opinion as to बोलो ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर इसके अंदर डैश करके लिखेंगे when the court has to form an opinion when the court has to form an opinion as to when the court has to form an opinion as to who has written or signed a particular document, then the opinion of the person then the opinion of a person then the opinion of a person then the opinion of a person who is acquainted with the handwriting or signature who is acquainted with the handwriting or the signature of the other person becomes relevant when the court has to next point when the court has to form an opinion when the court has to form an opinion when the court has to form an opinion as to the existence of a custom or a right as to a custom or a right as to a custom or a right then the opinion of the person then the opinion of a person having special knowledge on the same becomes relevant having special knowledge of the same becomes relevant अच्छा अब सुनना सेम ऊपर वाला पॉइंट कस्टम्स हटा के अपने को वहां यूसेजेस और टेनेट्स डालना है एक सेकंड टेनेट समझते हो क्या होता है टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स रूल्स ठीक है सो सेम ऊपर वाला पॉइंट उठाना है सो उसकी जगह पे कस्टम्स हटाओ यूसेजेस एंड टेनेट्स डालना है एंड द पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज बिकम्स रेलेवेंट सेम डिटो पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट कस्टम्स हटाओ यूसेजेस एंड टेनेट्स डाल दो लिख लिया नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट, grounds of opinion are also relevant. Grounds of opinion are also relevant. Are also relevant. Grounds of opinion are also relevant. Next heading डाल दीजिए, facts of which evidence cannot be given. Facts of which evidence cannot be given. Facts of which evidence cannot be given. There are certain facts of which evidence cannot be given. There are certain facts of which evidence cannot be given and are collectively referred as privileged communications. 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 Next point, following other types of privileged communications. A. Evidence of a judge or magistrate. Evidence of a judge और मजिस्ट्रेट, इसके अंदर डैश करके लिखेंगे. नो जज और मजिस्ट्रेट can be compelled to answer. Can be compelled to answer. No judge or magistrate can be compelled to answer. Can be compelled to answer any question as to his own conduct. Any question as to his own conduct unless a superior court requires the same. Unless a superior court requires the same. मैं इसमें एक पॉइंट मर्ज करने वाला हूं, लाइन चेंज करेंगे. नाइदर he is required to disclose the source of his knowledge about any fact. Neither he is required to disclose the source of his knowledge about any fact. Done. ब्रैकेट में लिख लेना. But he can be examined as to all the matters which happened in his presence. But he can be examined as to all the matters happened in his presence. B. Official communication. ठीक है. C. Communication during marriage. Communications during marriage. C. Communications during marriage. इसके अंदर
इसके अंदर डैश कम्युनिकेशन हेल्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज इज प्रिविलेज्ड during between husband and wife during marriage is privileged, and the disclosure of which cannot be compelled, and the disclosure of which cannot be compelled, and the disclosure of which cannot be compelled, and the disclosure of which cannot be compelled. Neither the same can be disclosed, neither the same can be disclosed without the consent, neither the same can be disclosed without the consent of the other party, without the consent of the other party. Next point. Evidence as to affairs of state. No evidence इसके अंदर no evidence which is derived from any unpublished official record, no evidence which is derived from any unpublished official record regarding the affairs of a state, regarding the affairs of a state shall be presented or accepted as evidence, shall be presented or accepted as evidence unless the head of the department, unless the head of the department, unless the head of the department consents for the same, consents for the same. Next up, professional communication. Next up is professional communication. लिख लें इसके अंदर a professional communication between an advocate and a client is protected from disclosure, is protected from disclosure, is protected from disclosure. And a client cannot be compelled, and a client cannot be compelled, and an advocate is not allowed to disclose any communication between them, to disclose any communication between them without the consent of the client, without the consent of the client. नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखना है, मतलब so no person can be compelled to disclose any confidential communication, no person can be compelled to disclose any confidential communication unless he offers himself as a witness, unless he offers himself as a witness, comma, in which case, comma, in which case comma, in which case he may be compelled, he may be compelled
to disclose the same. To disclose the same. Done? Perfect. अच्छा, अब शाम में 5:30 बजे आई विल कीप अनदर सेशन जिसमें स्टॉपल इतना सा आपको पढ़ा के लिखा के दे दूंगा, क्योंकि आपके लंच का टाइम हो रहा है, 15-20 मिनट और लग गए तो खाओगे कब? ठीक है, सो स्टॉपल 5:30 वर्क्स। डन पीपल, चलो समझा? अच्छा, एकदम इजी। आई थिंक जितना नोट्स में डिफिकल्ट था उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है वंस यू राइट इट अप। So that's how you have to write. That's complete chapter in answer writing format. Cool, works. Thank you so much for joining me lecture. This is Chirag signing off. Have a good one. Jai Hind, Jai Maharashtra.